Good morning, dear students. This is the second lecture on thermodynamics. In this, I will like to talk about thermodynamic quantities such as internal energy, work, heat, energy. After discussing this, I will proceed to the first law of thermodynamics. So let's begin. Just to begin the study, I will first create a system. Okay, first we will consider a system. Means a system, what is system? Part of universe which we are studying. So let's first draw a system. What it will be? It will be a jar, a gas jar. I will apply a piston upon it and gas molecules are filled in it. Okay, this is system, part of universe which we are studying. And what here I have drawn? A gas jar. A piston is here. What is the role of piston? When we will just push the piston down, piston को अगर नीचे करेंगे तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा. पिस्टन को जब हम ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो हियर वॉल्यूम वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज. नाउ कम अपॉन द प्रेशर. अब पिस्टन को हमने जब दबाया, प्रेशर हमने इंक्रीज किया. पिस्टन को हमने जब ऊपर किया, प्रेशर हमने डिक्रीज किया. सो वी कैन वर्क ऑन वॉल्यूम एंड वी कैन वर्क ऑन प्रेशर ऑल्सो. नाउ एनर्जी, व्हाट वी कैन डू, अगर हम इसे गर्म करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ठंडा करेंगे उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. सो वी कैन वर्क विद द टेम्परेचर ऑल्सो. हम इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. व्हाट चेंज वी कैन नॉट मेक, हम बस ये करेंगे कि इन गैस मॉलिक्यूल्स को वी विल नॉट लेट देम टू एस्केप आउट फ्रॉम द सिस्टम. बिकॉज अगर गैस मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो ऑन व्हाट थिंग वी विल वर्क. सो द मेन point in this system is that we will not let the gas molecules to escape out. गैस मॉलिक्यूल्स अंदर ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि we have to work on it only. हमें उसी पे डिफरेंट चेंजेस करते हुए वॉल्यूम, प्रेशर और हीट का हमें स्टडी करना है. ओके, एंड इफ आई विल टॉक अबाउट द हीट. So heat, what two things it can be given in two terms. Heat given to the system and heat given by the system. Can you understand the things? Heat is given to the system and heat is given by the system. हम heat दे रहे हैं जब system को. Okay, when we are heating the gas molecules, what happens? We are studying this from in very early classes. जब भी हम heat देंगे तो molecules की energy increase होगी. जब energy increase होगी तब हम जब भी increase होगी हम उसे positive से denote करेंगे. And when the system is giving out the heat, okay, then that will be the heat given by the system. तो जब इसकी हीट रिलीज होगी तो इसका एनर्जी कम, इसकी हीट कम हो जाएगी, तब हम उसे नेगेटिव से डिनोट करेंगे. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वन मोर टाइम. जब हम हीट दे रहे हैं, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, सो वी विल डिनोट इट विथ पॉजिटिव. व्हेन हीट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, the energy of the molecules is decreasing and we will denote it with negative sign. And when we will talk about the work, it also can be defined in two ways: work done by the system and work done on the system. अगर हम पिस्टन को नीचे करेंगे तो हम गैस मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू पुश द पिस्टन अप. तो जस्ट इमेजिन, छत पे से सीलिंग हमारे ऊपर गिर रही है और हम उसे ऊपर की तरफ वापस कर रहे हैं. एट दैट टाइम हम लोग की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. लाइक दैट ओनली
एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो विल डिक्रीज। अब हमें सीलिम को ऊपर करना है, तो उस समय हमारी एनर्जी क्या होगी? एज आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि वी आर लिविंग बींग्स, वॉट एवर थिंग इज अकरिंग विद अस विल नॉट अकर दस इन द सिमिलर वे विद द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, हमारी एनर्जी हम दीवार को नीचे करें या ऊपर करें, इन बोथ द केसेस हमारी एनर्जी खर्च होगी। लेकिन जब हम गैस मॉलिक्यूल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो जब हम उनको उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब हम पिस्टन को ऊपर करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, दैट वर्क and heat both can be positive and negative, and if when we will get the formula of total energy, delta E is equals to Q plus W. So this Q is not only heat and this W is not only work. Q will be denoted as heat, effect of heat, and W will be known as effect of work. Q can be positive and negative, as well as W also can be positive and negative. Okay, this thing you have to understand कि Q is the heat हमने जब सिस्टम को दिया, एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई, तो हमारा पॉजिटिव हीट होगा, और जब हमारा हीट रिलीज हो रहा है सिस्टम से, एट दैट टाइम Q will be negative. So we, instead of calling it heat, we call it effect of heat. Like the same way work done also, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो हम उसे नेगेटिव से डिनोट करेंगे। अगर सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। ओके, दीज आर द थिंग्स. Considering all these things, we will proceed to, just doing this, explaining this, we have reached to the formula of the first law of thermodynamics. We will see the conclusion and how it is coming out. Now let's see the definition of everything which I have explained here. What is internal energy, what is work, what is heat, what is energy. I hope it will make you easy to you all to understand the things. Okay. Let's see what is internal energy. Do remember it is denoted by capital E as well as capital U. So if it is written capital E, then also it means internal energy, and capital U, this also means internal energy. जो भी आपके हाथ में चढ़ जाए वो आप लिखिए, E भी लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं. Okay, so it is very difficult to find the internal energy of any system. अभी क्लास में सारे बच्चे हैं और सबको हमने खाना देना, आपको स्कूल में हमने रख लिया और खाना देना बंद कर दें, खाना पानी बिल्कुल देना बंद कर दें, तो कुछ बच्चे 5 आवर्स में ही उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, कुछ 10, कुछ 20, कुछ पूरे दिन काम करते रहेंगे, कुछ अगले दिन भी काम करेंगे, और मीन्स एवरी सिस्टम हैज़ डिफरेंट इंटरनल एनर्जी एंड वी कैन नॉट मेजर दैट इंटरनल एनर्जी. ओके, हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, हमारे कैपेसिटी कितनी है एनर्जी की, वो हम मेजर नहीं कर सकते. लाइक दैट ओनली किसी भी सिस्टम वी आर वर्किंग ऑन, वी कैन नॉट फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी, बट व्हाट वी कैन फाइंड देन, उसमें कितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है, मीन्स वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी. So wherever you will find capital E, capital U, you will always find it delta E, delta U, means difference in internal energy. Now see, whatever my internal energy is, अगर आप हम मुझे 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पानी में घोल के पिला देंगे, तो it means 50 ग्राम एनर्जी, calorie energy I have mine is increased. Okay, so that we can find out the difference, but exactly what the internal energy is of any system, it is very difficult to find out. So what internal energy is? Every system having some quantity of matter is associated with a definite amount of energy. Now, what type of energies can be? It can be translational, it can be rotational, vibrational,
बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी टर्म्स आप जानते हैं इन सारी एनर्जीज को हम एडअप कर देंगे, दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम. Okay, when we will add up all the energies, transitional energy, rotational energy, vibrational energy, bonding energy, electronic energy, जितना भी दिमाग में आ रहा है, whatever type of energy, when all will be sum, then we will get the internal energy. Okay, and the exact value of this energy is not known, as it includes all types of energies of molecules constituting the given mass of matters, such as all type of energies. And delta E, it is heat change of a reaction taking place at constant temperature and volume. Delta E is a state function, as I have given in the first lecture the definition of every term. So whenever you proceed in thermodynamics, please revise once. Please, it will be very easy for you all to understand what is intrinsic, extrinsic, isobar, isothermic, isochoric, and state function, path function. It will be very easy for you all to understand when you will just revise the terms again and again till you don't forget those terms. ओके, आप उन्हें तब तक पढ़िए जब तक आपको याद नहीं हो जाता है. As soon as the term is taken, your mind should start working that it is this. Okay, so there will be no confusion. So accurate measurement of some forms of energy which contribute to the absolute value of internal energy for a given system in a given state is impossible, as I have said in the beginning only. But one thing is certain, that the internal energy of a particular system is a definite quantity at the given moment, irrespective of the manner by which it has been obtained. So internal energy like temperature, pressure, volume, etc. is a state function. Okay, that is what it means. That is, total of all possible kinds of energy of a system is called its internal energy. This only I want to say, that total of all possible kinds of energy of a system is called its internal energy. If I will move on to the characteristics of internal energy, now you also can say internal energy of a system is an extensive property. Internal energy is a state property, and the change in the internal energy does not depend on the path by which the final state has reached. There is no change in internal energy in a cyclic process. Okay, these are the characteristics of internal energy. Nature of work and heat. So for work, you are studying from class 7th. Whenever a system changes from one state to another, it is accompanied by a change in energy. And the change in energy may appear in the form of work, heat, light, etc. Suppose you take a Duracell or any of the battery and you just put it in the torch. So that chemical energy is now converted into light energy. Okay, so work is a mode of energy transfer to or from a system with reference to its surroundings. And one thing is to remember that work appears only during a change of state of the system and not when the system is in equilibrium. Okay, in equilibrium, no work will be done. And if an object is displaced through a distance dx, I hope you remember the formula. Listen it carefully. If an object is displaced through a distance dx against a force F, then the amount of work done is defined as W is equals to F into dx. I hope you remember. And there are many types of work, and all of them could be expressed in two factors. Number one, intensity factor, and number two, capacity factor.
I will like to go through some of the types. Just like, just take the example one, gravitation work. What it is? Gravitation, you are aware of the term. If a body is moved through a certain height against force of gravity, the work is done and it is said to be gravitation work. Okay, as you know, gravitational pull, earth is pulling everything towards it, that is our gravitational energy. उसके against when we are working, when उसके ऊपर की तरफ हम कुछ against हम कुछ काम कर रहे हैं, that will be known as gravitation work. फॉर्मूला आपको याद होगा, mgh, it is numerically equal to mgh. m, mass of the body, g, acceleration due to gravity, and h, height moved. Here you can see that mg is the intensity factor and h is the capacity factor. बात समझ में आई इंटेंसिटी और कैपेसिटी फैक्टर में? ग्रेविटेशन वर्क, जब हम कोई काम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं वो से हम ग्रेविटेशन वर्क कहेंगे. इसका फॉर्म ग्रेविटेशन वर्क इज इक्वल्स टू एम जी एच. एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी, जी इज़ द इंटेंसिटी acceleration due to gravity, and h is the height moved. So here mg is the intensity factor and h, the height moved, is the capacity factor. Okay, let's take one more example, electrical work. What is electrical work? It is said to be done when a charged body is moved from one potential region into another. कोई भी सेल आप ले सकते हैं एग्जाम्पल. एंड इफ द चार्ज इज एक्सप्रेस्ड इन कूलम्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, then the electrical work is given by q volt, qv, that is potential difference is the intensity factor, and quantity of electricity is the capacity factor. Okay, electrical work is equals to volt into coulomb. Okay, 2 is done. Now let's take one more example, that is mechanical work. So what is mechanical work? Work associated with the change in volume of a system against an external pressure is referred to as the mechanical or pressure volume work. आपको पहले ही पिस्टन दिखाया हमने. अब यहाँ पे क्या कर रहा है? मैकेनिकल वर्क मीन्स जहाँ भी हमारे बल का प्रयोग करते हैं. वेन एवर वी आर यूजिंग ऑफ दैट मशीनरी और जैसे दैट मैकेनिकल फोर्स. ओके, हम क्या कर रहे हैं? अपने फोर्स से हम इस पिस्टन को नीचे कर रहे हैं और उसी फोर्स से हम पिस्टन को ऊपर कर रहे हैं. दिस विल बी अ मैकेनिकल वर्क. एंड कंसिडर अ गैस नाउ contained in a cylinder fitted with a frictionless piston. Okay, ये this only system you have to consider. Okay, gas cylinder fitted with a frictionless piston. So the pressure of the gas exerts. अब ये जो हम बाहर की तरफ जो प्रेशर है ना, that we say external pressure, तो ये हो जाएगा P external, PEX. और inside जो प्रेशर है that is the pressure of the gas molecules. So the pressure of the gas exerts a force on the piston. ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये दे exert a force on the piston. ये तो गैस मूव कर रहे हैं तो वो हर तरफ प्रेशर अपना exert कर रहे हैं. So they exert the pressure on the piston, and this can be balanced by applying an equal and opposite pressure from outside of the piston. अगर हम ऊपर से भी उतना ही प्रेशर डाल दें, इस पिस्टन को हम नीचे की तरफ ले जाएं, तो हमने क्या किया? हमने बैलेंस कर दिया. नीचे से जो प्रेशर लग रहा था ऊपर से ही हमने उतना प्रेशर P एक्सटर्नल उतना लगा दिया, तो हमने बैलेंस कर दिया प्रेशर को. दिस इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर. Okay, this can be balanced by applying an equal and opposite pressure from outside of the piston. means gas molecules जो वॉल पे पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे थे, हमने उतना ही प्रेशर पिस्टन को नीचे दबाते हुए लगा दिया, and that is known as external pressure. And P external and not the pressure of the gas is used in evaluating work, whether there is expansion or contraction of the gas. Okay, so whenever we are using the pressure, तो हम ये P external use करेंगे. As you know that work is equals to force into distance.
ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स है आपका PA, प्रेशर इनटू एरिया. P here P we will write P external into A into L. एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? So this will be written as dV. So P external will be your work will be equal to P external into dV. Differential V, that is change in the volume. So P external into V2 minus V1. So V2 will be final volume and V1 will be the initial volume. So the constant external pressure is the intensity factor and the volume change is the capacity factor. Okay, these are few examples I have given you about it, and one more important thing that you have to remember about the work done is that when work is done on the system, work will be positive, and work done by the system अगर काम करेगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो हम उसे नेगेटिव में डिनोट करेंगे, और जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो हम उसे पॉजिटिव वर्क में डिनोट करेंगे. इसे आप बहुत थॉरली याद रखिए. ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम W इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम W विल बी नेगेटिव. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हीट. Heat may be defined as the quantity of energy which flows between the system and surrounding on account of temperature difference. As you know, temperature increase करना means उसकी energy increase करना, temperature decrease करना means energy कम करना. So आपको you know that temperature always moves from higher to lower, ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा flow करता है. Okay, it always flows from a point of higher temperature to a point of lower temperature. Okay, and it is equal to mst. अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, mst. What is m? Mass of the substance. S, the specific heat, and T is the temperature difference. And the symbol of heat is Q. Q से डिनोट करते हैं इसे. And it is a path dependent quantity and manifestation of energy. When heat flows into the system, its energy increases, and when heat flows out of the system, its energy decreases. Okay, you have to remember, for work you have remember, for heat also you have to remember. When heat flows into the system, अगर हम सिस्टम के अंदर हीट भेज रहे हैं, हम उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हम हीट को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे. और जब हमारा हीट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, वहाँ एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, देयर वी विल राइट -Q. ओके, सो हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, पॉजिटिव होगा, और हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम, हीट विल बी नेगेटिव. As you know the unit of heat, we can take it into calorie, and it is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. I am revising this thing of yours. Okay, unit of heat, calorie. What is calorie? Defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. Okay, so this was all your internal energy, heat and work done. Now let's move on to the first law of thermodynamics. Many definitions you will get about it, and you are studying from the very beginning that energy can neither be created nor be destroyed, although it can be converted from one form to another. If you like to listen, I can give you a few more definitions. The total energy of the universe is constant.
अगर इस चीज़ों को हमने जितनी भी चीज़ें अभी बोलते जा रहे हैं, वेन एवर अ क्वान्टिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी in some other form must appear. Okay, it is impossible to construct a perpetual motion machine which could produce work without consuming energy. Means ऐसा कोई हो ही नहीं सकता सिस्टम जिस बिना एनर्जी के वर्क कर सके. When you will listen all the definitions, and if you will try to recall, if you have seen in Mahabharata or you have not seen there, in most of the copies in the last pages you must have read that it has been written for the, I'm going on little bit spiritual, लेकिन just to make you understand, आत्मा अजर है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता. उन चीज़ों को जब आप कोरिलेट करेंगे तो यू कैन थिंक दैट एट दैट टाइम द लॉर्ड कृष्णा वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द थर्मोडाइनमिक्स. ओके, कोई चीज़ आत्मा अजर है, अमर है, एंड ऑल द थिंग्स, जो वट एवर थिंग ही वॉज एक्सप्लेनिंग, अगर उसे आप ध्यान से एक बार आपको मिलता है, आप यू रीड इट वंस एंड जस्ट सी इट, एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट गिविंग दिस प्रीच और ही वॉज एक्सप्लेनिंग थर्मोडाइनमिक्स. Okay, that only is your thermodynamics. So when a system is changed from initial state to the final state, it undergoes a change in internal energy from U internal to U final. Thus delta U can be written as delta U. How we can write? Delta U is equals to U final minus U initial. And the change in internal energy can be brought about in two ways. Either by allowing the heat to flow into the system, means absorption, or out of the system, evolution. Okay, or by doing work on the system or the work done by the system. Many times I am repeating these things. I hope this is clear to you. आपका जो हीट है और आपका जो वर्क डन है, दो तरीके से हो जाता है. जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे और जब सिस्टम हमारा वर्क करेगा, दो तरह से होगा. तो जब हीट हम देंगे और या तो हीट वापस निकलेगी सिस्टम से, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, या हीट इवोल्यूशन करेगा सिस्टम. एंड बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ओके, सो वी विल गेट द फॉर्मूला डेल्टा यू. आपको बताया वी कैन राइट इट डेल्टा ई ऑल्सो. Delta U or delta E will be same thing. So don't get confused that somewhere it is written delta U, somewhere it is written delta E. Both is same. Only remember this. So delta U will be equal to Q plus W. Okay, और आपको बताया है we will not say only heat and work done. हम यहाँ बोलेंगे effect of heat, effect of work done. क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. Like this, work done also can be positive and negative. Okay, so the net energy change of a closed system is equal to heat absorbed plus the work done on the system. So there will be a mathematical expression for math students. It will be very easy to understand. Let's try to understand here. You have to give time and you have to understand, you have to remember, you have to learn. Okay, so heat absorbed by the system will be equal to its internal energy plus work done by the system. And for infinitesimal process, dq is equals to de plus dw, where q is the heat supplied to the system and w is the work done on the system. So for different type of system, I will explain this. What happens when we work on, or we can say that these are the useful conclusions drawn from the first law. Okay,
So that I will like to explain after this. Okay. Conclusions which are drawn from the first law. By taking the first law again and its useful conclusion, I will discuss in the other lecture. Otherwise it will start overflowing on you all. Okay, try to understand all the things which I have explained. Go through. I will always say your best friend for studying should be your textbook. Okay, any query, any doubt, go through your textbook. Still it is not clear, your teacher is present. At any moment you can raise your question to your teacher. Okay, thank you so much. In next lecture we will meet again. Thank you, children.